Frog nervous system, divisible into three parts. First, CNS, central nervous system. Second, PNS, peripheral nervous system. And third, ANS, autonomic nervous system. CNS has two parts, brain and spinal cord. PNS, which comprises the nerves. Nerves, those arise from the brain, we call cranial nerves. Nerves, those arise from the spinal cord, we call spinal nerves. Next is the autonomic nervous system, divisible into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Right? Sympathetic and parasympathetic nervous system. Now, आपने कभी ये फील किया है रिजल्ट आने वाला है, राइट? इवन बोर्ड का पेपर एग्जाम देने जा रहे हो, जब तक पेपर हाथ में नहीं आए, कौन सा क्वेश्चन आएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, राइट? आईज में पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट आने वाला है, वेबसाइट ऑन नहीं हो रहा है, रिजल्ट आ गया, योर हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड, राइट? हैव यू फील दिस थिंग? So that is the response of which system? This one, sympathetic nervous system. Sympathetic increases the heart rate. Same thing present in human also. फिर आपने ये भी फील किया होगा, एक बार रिजल्ट आ गया, चलो जो भी आया है, okay, after some time you will get normal, right? So that is performed by पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक के लिए हम ये बोलेंगे डिक्रीज द हार्ट रेट, बट अंडरस्टैंड डिक्रीज मीनिंग व्हाट? नॉर्मलाइज. जो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज करता है, मीनिंग व्हाट? नॉर्मलाइज. तो मैम नॉर्मलाइज लिखे तो ना चले? नहीं, इसमें पर्टिकुलर यही वर्ड, ओके, डिक्रीज के साथ आपको ऐड करना है, देन यू कैन डू दिस. So sympathetic nervous system increase the heart rate, parasympathetic decrease. Generally, in most of the cases, like कोई फूड है, टेस्टी फूड, राइट? तो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो वो सलाइवेशन इंक्रीज करना भी सिंपैथेटिक का काम है. पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज कर देता है, राइट? व्हेन वी ईट दैट फूड, देन salivation become normal. Most of the cases, sympathetic increase and parasympathetic performs to decrease that. Where in some of the cases, parasympathetic increase करता है and sympathetic decrease करता है. That all thing we will learn in chapter number 21. Neural control and coordination. Just now remember for frog this one, sympathetic increase, parasympathetic decreases. Right? Up to here, if you have any doubt, you can ask me in this part. No? Now, next thing, that's the cranium. Next word is cranium. When you touch on your scalp, okay, टक टक करते हो तो हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता. इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर, राइट? एक्चुअली ब्रेन इज अ सॉफ्ट टिश्यू. ब्रेन कैसा होता है? इट्स अ वेरी सॉफ्ट मास, एंड विदाउट ब्रेन, ओके, पर्सन कैन नॉट बिलीव, ब्रेन डेड हो जाता है, राइट? कोमा में. So brain is a very, very important, it's a main controlling organ of our body. So it needs a protection. So brain, soft tissue mass, needs a hard, tough protective covering, which is a bony covering, and that covering you call cranium. Right? That we call the cranium. Now next, cranium term clear first of all. Right? Head पे जो अब आप टक टक आवाज आता है ना, that is the cranium bone, skull bone. Now we are going to learn brain. Brain has three parts. आया इस lower standard में forebrain, midbrain, hindbrain? आया है, I think so, yes. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, in that three parts are there. First, olfactory lobe, then cerebral hemispheres, and then diencephalon. Have you ever heard all this term?
मैम Now फर्स्ट और onwards मैं सेकंड टर्म सुना है, थर्ड नहीं सुना। डायनसेफेलॉन नहीं आया होगा, राइट? ओके. Olfactory lobe, cerebral hemispheres, and diencephalon. These three structures form forebrain. Midbrain, only one structure, optic lobes. Okay, midbrain, only one structure, optic lobes. And hindbrain, in that cerebellum and medulla oblongata. Two parts. First is the cerebellum and then medulla oblongata. Right? Imagine कि over here the brain is completed. Right? हमारा भी हेड रीजन है, हेड रीजन में ब्रेन इज लोकेटेड एंड आफ्टर द नेक स्पाइनल कोड आ जाता है, पता है ना? स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम इज देयर. सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे ये हाइंड ब्रेन कंप्लीट हुआ एट दिस पॉइंट. नाउ द स्पाइनल कोड इज देयर. स्पाइनल कोड एक्चुअली कवर्ड बाय, जैसे ब्रेन कवर्ड बाय दैट क्रेनियम बोनी स्ट्रक्चर, the spinal cord is covered by what? Vertebral column. Spinal cord is covered by what? Vertebral column. Right? Vertebral column is a bony structure in which this spinal cord is present, in which fluid is there. Fluid bhi hota hai, nerves, neurons are there. Right? So at this junction, at this point where the hindbrain complete and spinal cord start, hindbrain complete, medulla oblongata part and spinal cord start. At this junction, the opening is there. That we call foramen magnum. That we call foramen magnum. Right? So medulla oblongata or the hindbrain through the foramen magnum continues as a spinal cord which is enclosed by vertebral column. बोलिए, ये लाइन क्लियर है? Foramen magnum. मैम will you repeat the statement again Yes. please? See, hindbrain first क्या होता है? Forebrain, then midbrain, then hindbrain. Hindbrain का भी last which one? Medulla oblongata. Now medulla oblongata through this foramen magnum, which is an opening, one opening is there. Okay, through the foramen magnum continue as a spinal cord now, and that spinal cord is enclosed by bony structure that you call vertebral column. Right? Now next, just brief information. Do you know what is the meaning of olfaction? Olfaction term हम किसके लिए use करते हैं in general? Smell. Right? Olfaction का meaning क्या होता है? Smell. Smell के लिए our nose region, same way frog has nostril. Right? तो nostril का जो surface होता है, inside surface, over there specialized cells are there which can sense the smell, that we call olfactory epithelium. Right? Which can sense the smell, and वो smell के जो senses है through the nerves go to this brain region, particularly which one? Olfactory lobes. फिर olfactory lobes उसको analyze करेगा कि what type of smell is there, good smell or bad smell is there. Right? Just imagine वो process कितना fast होता होगा. Nose में अभी enter हुआ नहीं कि we can recognize कि yes, this one is a good smell or bad. Right? So olfaction का meaning होता है smell. Olfactory lobes involved to sense the smell. Second is cerebral hemisphere. Cerebral hemispheres. See, one thing, everyone has the emotions, right? Happiness, sadness, like that. Then everyone has a different kind of memory power, intelligence. Why? Why this thing? Otherwise, everyone has the same type of brain, forebrain, midbrain, and hindbrain, but still the differences are there.
ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. जितना ज्यादा सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप होगा, राइट, memory power, intelligence power is much more developed. Okay, so cerebral hemisphere actually involve, उसका function क्या है? For memory, intelligence, emotions. frog में ये सब नहीं है. ये humans में well developed है. frog में this cerebral hemisphere are present but not well developed. Right? Then diencephalon helps in to metabolism of carbohydrate, protein, fat. वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. बोलिए, 4 ब्रेन के पार्ट्स का फंक्शन क्लियर? एनीवन हैव अ डाउट? राइट. नेक्स्ट, मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में ओनली वन, ऑप्टिक लोब्स. ऑप्टिक का मीनिंग तो पता ही होगा. ऑप्टिक पैलेस सुना है ना? बोलिए जिया, फंक्शन ऑफ ऑप्टिक. मैम विजन. Vision, right? So for vision, to sense the light, optic lobes are there. Then hindbrain, cerebellum. Cerebellum controls voluntary activity, like walking करना है frog को, या jump करना है, swimming करना है, तो उसके skeletal muscles, limb muscles utilize होंगे वहां पे. So cerebellum controls this voluntary activity. Medulla oblongata controls involuntary activity. जितने भी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होते हैं, राइट, लाइक पर्सपिरेशन, हार्ट बीट, right, respiration, all digestion, this all things are involuntary. This the kind of activities we can't control. Autonomic hota hai. So medulla oblongata controls involuntary activity. Cerebellum controls voluntary activity. Any doubt in this part? Okay. Now I'm showing you the picture not given in your textbook, but understand the structure of brain of brain. Two views are there. One is a dorsal, other is a ventral. Here the olfactory lobes are present. Then with that cerebral hemispheres are there. Then next, this much portion only, diencephalon. Okay. Now next, these are optic lobes. तो यहाँ तक क्या हुआ? forebrain. ये हुआ midbrain. See, so many other informations are given in this diagram. No need to prepare. Just understand the structure. Then medulla oblongata, triangular shape का होता है. So this portion, initial portion you call cerebellum, and बाकी का ये जो portion होता है we call medulla oblongata. Right? Next, two more things that you have to remember. One is the pineal body, and another is a pituitary. Pineal gland or pituitary gland, you can say that. Pineal secrete one of the hormone, melatonin. It's an endocrine gland. And pituitary, as you know, it's a master endocrine gland. It secretes so many hormones. Right? So pineal gland secretes melatonin, and pituitary gland, it's a master gland. Next topic जो endocrine gland है, in that I will dictate you which hormones are secreted. Right? But pineal and pituitary both are present in frog brain also. And one of the structure, this, can you make out here that cross-like structure is there? जो मैंने circle किया है, right? That we call optic chiasma. Meaning क्या है? Just imagine के eyes है यहाँ पे, frog के eyes, from which the nerves arise. Here one more eye, nerves arise, optic nerve, and this optic nerve, जहाँ पे diencephalon था, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था at that portion, diencephalon very next. तो अगर उसके बैक साइड पे देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा. These nerves cross and form optic chiasma. Okay, that structure we call optic chiasma.
बोलिए, any doubt in nervous system of frog? Right? Then next part, sense organs. Sense organs first, frog has touch sense that you call tactile. Touch का हम बोलते हैं tactile receptors, right? Sensory papillae. Papillae like this type of structure on skin, right? That we call papillae, which can sense the touch. फिर taste होता है एक, right? Because you know frog has tongue, long tongue. So tongue के ऊपर taste buds है, which gives a taste. Next, nasal epithelium, smell, olfaction. Eyes present है, तो eyes vision provide करेंगे. Then in morphology we have learned that the tympanum is present, right? So that provide hearing ability. So one term, see हमारे eyes से eyes के just नियर बाय आप टच करोगे ना तो आपको एक बोनी कैविटी जैसा फॉर्म स्ट्रक्चर फील होगा. ओके, आईज के आसपास जस्ट फील करो तो बोनी स्ट्रक्चर फील होता है राउंड में ही पूरा, इफ यू टच ना, राइट? सो दैट कैविटी यू कॉल्ड ऑर्बिट. सेम थिंग प्रेजेंट इन फ्रॉग आल्सो. Eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in the skull. Orbit means bony cavity, right? फ्रॉग के पास कौन सा आई होता है? सिंपल, लाइक अस. कॉकरोच में कंपाउंड था, हियर सिंपल आई इज प्रेजेंट. In frog, one thing, ear is not only helpful in hearing but also helps in balancing also, like us. ईयर हमारे बैलेंस के लिए भी हेल्पफुल होता है, पता है? अभी तो नहीं करते होंगे, बट छोटे थे तब पता है, राउंड 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 कंटिन्यूअसली हम राउंड 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 करते थे एंड सडनली आप स्टॉप हो जाओ तो हेड में भी शेकीनेस फील होता था. व्हाई? बिकॉज इनसाइड द ईयर फ्लूइड इज देयर. वो फ्लूइड भी रोटेट करता है एंड वंस वी स्टॉप ग्रेजुअली वो पोजीशन जो उसका जो मूविंग पोजीशन है, मोबाइल पोजीशन स्टेबल में आता है एंड देन वी फील दैट नाउ आई एम कंफर्टेबल. अदरवाइज वी फील व्हाट? शेकीनेस. ओके, राउंड करना है तो स्टॉप हो जाता है बट स्टिल वी फील दैट आवर हेड इज शेकिंग शेकिंग एंड शेकिंग. ऐसा आप ट्रैवलिंग करते हो ना तो भी आपको फील होता है. अगर आप बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, फिर घर पे आ जाते हैं ना तो भी ऐसा ही फील होता है कि अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि बस में ही बैठे, राइट? बिकॉज वो कंटिन्यूअसली फ्लूइड का मूवमेंट होता रहता है. Now only one thing is remaining in this chapter, that endocrine system. Endocrine system or endocrine glands. First gland, see in your book just given that name of the gland, right? But remember the hormone also. First gland, thyroid. As we have discussed, it produces thyroxine, which is necessary for metamorphosis. Note down. Right? Second gland, parathyroid. Thyroid, फिर second है parathyroid. Parathyroid secretes which hormone? Parathormone. Parathyroid, parathormone. And that regulate calcium and phosphorus balance in blood. Calcium phosphorus balance in blood. Parathormone. Next. Adrenal. Adrenal gland, remember na?
मैंने बोला था कि किडनीज के वेंट्रल साइड पे ऐसे सेंट्रल में स्ट्रक्चर था, इफ यू रिमेम्बर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, राइट? दिस इज द, दैट डजंट मीन कि किडनी के अंदर है, किडनीज है एंड किडनीज के ऊपर ये है एड्रिनल on ventral surface, right? So that gland we call adrenal gland, which secretes cortisol, aldosterone, cortisol and aldosterone. मैम एड्रेनालिन नहीं होगा? फर्स्ट ये दो लिखा आपने. Adrenal has two parts, cortex and medulla, right? उसका जो cortex part होता है, that secretes this thing, cortisol and aldosterone. And next, adrenaline, noradrenaline, or you can say that epinephrine, norepinephrine भी बोलते हैं इसको. ये medulla part secrete करता है. Together we call adrenal hormones. Next, pituitary, master endocrine gland. Pituitary secretes thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. Short form TSH. Right? Then ACTH, adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone, ACTH. Then gonadotropic hormone. Gonadotropic hormone to stimulate the gonads. Testes and ovary को stimulate करते हैं कि अभी sperm production करना है, ova production करना है, for that. Right? So that we call gonadotropic hormone. Next, skin color के लिए melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone, MSH. Right? Few still are there, but no need to remember for time being. This are enough. Next gland, pineal. Pineal, I have already told you, melatonin. Then thymus gland. Thymus हार्ट के पास होता है. Thymosin, वो immunity provide करता है. Thymus gland secretes thymosin. Right? Then next, pancreas. Remember in that exocrine endocrine gland, pancreas behaves as an exocrine as well as endocrine gland statement. Glandular epithelium में learn किया था. In that I have told you कि ये pancreas है जिसमें center में 3 different types of cells are there, alpha, beta, delta. Yes or no? Remember or not? Not है ना? अभी पूरा चैप्टर रिवाइज कर देना. आई हैव इन्फॉर्म यू ना कि दिस थर्सडे चैप्टर नंबर 7 टेस्ट entire. Okay, so this center portion which forms hormone, that is the islets of Langerhans. मैंने ये नेम भी दिया है आपको, islets of Langerhans. That is the main endocrine part which secretes hormone.
And lastly, gonads, testes and ovary. They also secrete hormone. Ovaries. Testes में testosterone, ovaries में estrogen, progesterone. So they also consider as a endocrine glands. Clear है?